नमस्कार दोस्तों। तो मैं अब जो है आज आपको बताने जा रहा हूँ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, इसकी वेरियस जजमेंट्स आई है 13 जनवरी 2023, यानी इसी साल। ये था एक दिन पहले जब जो है विंटर वेकेशन के लिए क्लोज हुआ है हाई कोर्ट। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो है इश्यूज पे आई है जजमेंट्स। तो मैं आपको अब सीधा ले चलता हूँ इन जजमेंट्स की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आई है लैंड एक्विजिशन पे। ये जो है डिवीजन बेंच की जजमेंट है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्वॉल्व था वो था लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड था, वो था लिमिटेशन पीरियड का। द क्वेश्चन रेज्ड बाय द पिटिशनर इज वेदर द लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 18 and 28A of the Land Acquisition Act for availing the remedies provided under these sections for seeking reference or for payment of correct market value of acquired land is violative of second proviso to Article 21A1 of the Constitution of India। तो ये जो है इसमें मेन जो है पॉइंट इशू जो रेज किया गया था। तो इस पे जो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन की है वो पैरा 5 में की है और पैरा 6 में जो है इसमें कंक्लूजन किया है, जिसमें जो है कोर्ट ने अल्टीमेटली ये होल्ड किया कि नहीं। तो मैं आप पढ़ लेता हूँ ये क्या है कि फंडामेंटल राइट दैट इज एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 31A1 सेकंड प्रोविजो इज दैट लॉ प्रोवाइडिंग फॉर acquisition of the property which is within personal cultivation and within applicable ceiling limit of a person must have provision for payment of market value of acquired land. This is to enable aggrieved person to seek market value of his acquired land. सेकेंड जो इशू जो इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया है, द लैंड एक्विजिशन एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस इन फॉर्म ऑफ सेक्शन 1823 एंड 828A etc. for providing market value of the acquired land. These sections satisfy the mandate of second proviso to Article 31A1 of the Constitution। जो थर्ड डिसीजन इसमें दिया है, the second proviso to Article 31A1 does not prohibit prescribing period of limitation in seeking market value of acquired land in legislation pertaining to the acquisition of land within personal cultivation and within applicable ceiling limit of the person concerned। और जो इसमें फोर्थ इशू जो डिसाइड हुआ है वो है प्रेस्क्रिप्शन ऑफ लिमिटेशन पीरियड अंडर सेक्शन 18 एंड 28A ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ राइट्स and for enforcement of such rights available in these provisions is not unconstitutional. The provision of time period stipulated in these provisions is intra vires of the Constitution and is valid। तो इसमें जो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ये होल्ड किया है कि जो सेक्शन 18 एंड 28 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो इसमें लिमिटेशन का पीरियड है वो बिल्कुल सही है और ये विद इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिव्यू में आता है। और सेकंड जो जजमेंट है मैं वो आपको ले जा रहा हूँ, वो क्वेश्चनिंग से रिलेटेड है। और ये जजमेंट जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय मोहन गोयल ने दिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें भी एक डिसीजन आया है, वो क्वेश्चनिंग से रिलेटेड है। जो क्वेश्चनिंग थी वो थी सेक्शन 201, 120B और 182 ऑफ द आईपीसी एक्ट के तहत जो एफआई और जो प्रोसीडिंग्स थी उसके लिए इसमें क्वेश्चन के लिए प्रेयर की गई थी। इसमें जो मेन लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व था वो डिस्कस हुआ है पैरा 3 में, और वो था the questioning thereof has been prayed on the ground that in terms of the provision of section 195 of the CRPC, no court shall take cognizance of any offence punishable under section 172 to 188 of the IPC except on the complaint in writing of that court or by such officer of the court as that court may authorize in writing in this behalf or of some other court to which that court is subordinate and said procedure has not been followed while prosecuting the petitioner। तो इसमें जो है मेन जो इशू इन्वॉल्व था जो पैरा 12 में जो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें डिस्कस किया है वो है कि दिस कोर्ट इज ऑफ द कंसिडर्ड व्यू दैट द लॉ इज इन फैक्ट well settled by Honorable Apex Court that where an accused commits some offences which are separate and distinct from those contained in section 195 of the CRPC, then section 195 of CRPC will affect only the offences mentioned therein unless such offence form an integral
part so as to amount to offenses committed as a part of same transaction, in which case the either offenses also would fall within the ambit of section 195 of the CRPC। जो मेन इशू इसमें जो लीगल क्वेश्चन था वो था offenses committed in the same transaction। फिर आगे जो है फर्दर ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा, इन द प्रेजेंट केस द ऑफेंसेस व्हिच हैव बीन alleged to have been committed by the petitioners besides section 182 of the CRPC which is committed in section contained in section 195 of the CRPC are alleged to have committed in the same transaction, and these offenses form an integral part of the main transaction, and even as per the prosecution the offenses committed were part of the same transaction। What is the lodging of the FIR by the petitioner on the basis of concocted and created story। तो ये एक मेन इशू इसमें डिसाइड हुआ और इसी के बेसिस पे जो है वो प्रोसीडिंग क्वेश की गई है। ये एक वेल सेटल्ड लॉ है कि अगर कोई भी ऑफेंस सेम ट्रांजैक्शन में किया गया है और उसमें देयर आर सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स जो कि मीट नहीं हो रही है, तो वो ऑल द ऑफेंसेस कैन नॉट बी ट्राइड टुगेदर। नेक्स्ट जो है वो बेल के ऊपर आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनफैक्ट जो मेन इशू था वो है कि अक्यूज जो है बिहाइंड बार पिछले 8 सालों से है और उसमें जो है चलान जो प्रेजेंट 2015 में हुआ है और अक्यूज 8 साल से जो है बिहाइंड बार है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें रीजनिंग देते हुए कहा कि विदाउट कमेंटिंग अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस, कंसीडरिंग एंटायर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ब्रॉट बिफोर me and taking into consideration the factors and parameters required to be considered at the time of considering bail application as propounded by the courts including the Supreme Court, I am of the opinion that this stage petitioner may be enlightened on bail। काफी लंबा अरसा इसमें जो है अक्यूज को हो गया था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें जो है दिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक और डिसीजन आया है वो है कोर्ट की सिटिंग के बारे में, और इसमें जो है मेन इशू था जो कोर्ट ने ऑन इट्स ओन मोशन ये केस किया है। इसमें जो मेन इशू था कि जो अक्यूज है वो बेड रिडन था, और इसमें एक जो है रेफरेंस आया था ऑनरेबल कोर्ट के पास। इट वाज सबमिटेड दैट अक्यूज नरेश कुमार वाज बेड रिडन एज ए नॉन केस ऑफ फ्रैक्चर C5 विद क्वाड्रिप्लेजिया leading to permanent loss of function। He was not able to move from one place to another although his memory and speech was normal। हालांकि इसमें जो है होना तो ये जो केस इस तरह से हुआ था, ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था और अक्यूज्ड खुद 100% डिसेबल्ड हो गया था इसमें। तो इसका भी ट्रायल भी चला था क्योंकि फॉर नेग्लिजेंटली ड्राइविंग तक व्हीकल। तो लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि इसमें जो है अंडर सेक्शन 9 ऑफ CRPC जो ये पावर जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास थी और उन्होंने वो एक्सरसाइज नहीं की है, तो इसीलिए ये पावर उनको ही एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। तो इसमें जो है फिर फर्दर ये भी होल्ड किया गया कि जो एविडेंस है वो अक्यूज की प्रेजेंस में होना है और अक्यूज इज नॉट एबल टू कम प्रेजेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो सेक्शन 12 में इसमें जो ऑब्जर्वेशन की है ऑनरेबल कोर्ट ने वो कहा है, फर्दर इट विल बी रेलिवेंट टू नोटिस दैट दो सेक्शन 273 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड्स फॉर ऑल एविडेंस टू बी टेकन in the course of the trial or other proceeding in the presence of the accused or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, yet such provision has been made subject to exception provided in the court। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इन दोनों जो सेक्शन है 317 और 273 का हवाला देते हुए कहा है कि कंसीडरिंग क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ सेक्शन 273 एंड 317 ऑफ द कोड, it cannot be said as an absolute rule that in no case the evidence in trial or inquiry before criminal court can be recorded in absence of accused। और पैरा 15 में ये कहा है, it also cannot be ignored that the recording of evidence through video conferencing is permissible subject to fulfillment of certain condition in appropriate cases such mode can also be made available। लेकिन जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस प्रेजेंट केस के थे इसमें ये पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी है कि अक्यूज के पास ही जाके इसमें रिकॉर्ड किया जाए। थर्ड जो एक नेक्स्ट जो है वो प्रमोशन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा इशू इसमें आया है। ये भी डिसीजन बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय मोहन गोयल की कोर्ट ने दिया है, और इसमें जो प्रमोशन टू दी पोस्ट ऑफ मैनेजर हाउस कीपर गेस्ट था, प्रमोशनल कोटा से पॉइंट इन्वॉल्व था। इसमें जो है डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उन्होंने रिलैक्सेशन देके और इनको इग्नोर कर दिया था जो इसमें पटिशनर थे। तो
ये जो फैक्ट्स है इसमें पैरा 5 में क्या है, the grievance of the petitioner is that despite the fact that in the rules relating to the post of manager and assistant manager, there is no provision of any appointment to these posts by way of LDR, that is limited direct recruitment. Yet the private respondents were appointed to the post concerned through limited direct recruitment process in relaxation of RNP rules. It is in this background that the petition has been filed, praying for the leaves already enumerated herein above. इनफैक्ट ये भी एक सेटल लीगल पोजीशन है कि जब आपके पास एलिजिबल कैंडिडेट्स अवेलेबल हो तो आप रूल्स में रिलैक्सेशन नहीं दे सकते, और इसी बिना पे जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो है ये डायरेक्शन दिए है कि लेट a departmental promotion committee be held for effecting promotion against the post of manager housekeeping and manager front office, and all eligible incumbents in terms of the RNP rules, including the petitioners, be considered for said promotion, and those who are found eligible be conferred promotion against the post of manager housekeeping and manager front office with effect from 9 July 2019 by conferring them seniority over and above the private respondents in the respective cadres with all consequences to ensue order accordingly. हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें बैलेंसिंग भी की है कि जो ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं उनको जो है डिमोट नहीं किया जाएगा, उनको जो है सेम ही पोस्ट पे रखा जाएगा टिल देयर सुपरएनुएशन, एंड जो पिटिशनर है उनको सीनियर कर दिया जाएगा. एक और जो नेक्स्ट डिसीजन आया वो नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही लंबी जजमेंट है, ये एलोबरेट जजमेंट है. इसमें जो है डिपार्टमेंट ने क्या किया कि रिस्पोंडेंट्स वाइल कैंसलिंग लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट issued on 20th February 2009 in respect of the petitioner company, they also ordered for forfeiture of upfront premium of rupees 64 crore. तो नेचुरली इसमें जो है डिपार्टमेंट ने जो इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी है, जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है पैरा 39 में. Interestingly, in the case at hand, respondents, without affording opportunity of hearing to the petitioner and without uttering a word with regard to correctness and genuineness of problems issues highlighted in the communication details so and so, proceeded to order forfeiture of upfront premium after cancellation of LOA, which action of the respondents cannot be said to be in accordance with law, rather same being totally contrary to principles of natural justice deserve to be quashed. और इसमें कोर्ट ने पैरा 48 में ये भी ऑब्जर्व किया कि कोई भी प्रूफ डिपार्टमेंट ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग जो है दिया है ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग हैविंग बीन अफोर्डेड. तो इसमें कहा कि सिंस इन द केस एट हैंड नीदर देयर इज एनी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नो लर्नड एडवोकेट जनरल हैज बीन एबल टू पॉइंट आउट डॉक्यूमेंट्स इफ एनी suggestive of the fact that opportunity, if any, was granted to the petitioner before issuing impugned order letter, same is liable to be quashed, being manifestly arbitrary and violative of principles of natural justice. और पैरा 74 में ये ऑब्जर्व किया कि since the court is convinced and satisfied for the reason discussed herein above that the project had become techno-economically and financially unviable for the reasons beyond the control of the developer project proponent, no punitive action can be taken against it on account of breach of pre-implementative agreement. Clause 47 of the pre-implementation agreement, as discussed herein above, provides that no party shall be considered to be in breach of pre-implementation agreement for the reasons beyond the control of the developer. एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन जो ऑनरेबल कोर्ट ने की है वो है इन पैरा 78, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट विच इज स्टेट टू बी फेयर इन कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स as otherwise a private entities would be reluctant to enter into business with the government. Here in the present case, the state has received upfront premium from the petitioner, and had the project been viable, it would have undertaken the same, but for the reason that the project had become unviable, it could not go on with the project and decided to withdraw from the project. और अल्टीमेटली जो डिसीजन पैरा 83 में दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने, कॉन्सिक्वेंटली इन व्यू ऑफ डिटेल्ड डिस्कशन मेड अबाउट दिस कोर्ट फाइंड्स मेरिट इन द पिटीशन एंड अकॉर्डिंगली सेम इज अलाउड. नेक्स्ट P1 so and so is issued to the petition is hereby quashed and set aside with the direction to the respondent to refund amount of upfront premium
ऑफ ₹64 करोड़ विद इंटरेस्ट। तो ये जो एक बहुत ही लंबी जजमेंट है और इसमें बहुत ही एलोबरेटली जो है एक्सटेंसिवली जो है इसमें केस लॉ भी डिस्कस किया गया है, तो जो कि रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और दूसरे कंसिडरेशन से। इससे जो नेक्स्ट जजमेंट है वो सीपीसी से रिलेटेड है, वो आई है प्रोसीजर फॉर समन। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, इसमें भी एक जो डिसीजन आया है, ये जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वीरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने दिया है। इसमें जो फैक्ट्स है वो है सेटिंग साइट एक्सपर्टी जजमेंट के लिए था। इसमें ऑनरेबल सिंगल जज की जो जजमेंट थी जिसमें कि उन्होंने एक्सपर्टी किया था, जजमेंट पास की थी अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, ये जो है उनकी एप्लीकेशन डिसमिस हुई थी। और जो रीजन है इसमें कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें डिस्कस हुए हैं वो हुए है ऑर्डर 5 रूल 2 ऑफ सीपीसी में, अकॉर्डिंग टू द अपेलेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 5 रूल 2 ऑफ द सीपीसी, every summon shall be accompanied by a copy of plate, whereas the report dated 25th February 2012 of the serving officer does not reflect that a copy of the plate was attached with this। और मैंडेटरी प्रोविजंस के बारे में डिस्कस जो इसमें पैरा 26 और 27 में हुआ है वो ये है, the impugned order has also been assailed on the ground that the learned single judge has not considered the provision of order 5 rule 17 and 19 of CPC. Those mandatory provisions have been stated to be ignored while deciding the application moved by the defendant. The other ground of challenge is that the learned single judge has not considered the fact that the process server has neither sworn in his affidavit nor made the declaration about the fact that the affixation had been done in accordance with law। और फिर इसमें जो है नो प्रॉपर सर्विस हुई है, इसके बारे में जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है वो पैरा 46 में और 47 में है। इसमें यह है कि इन अदर वर्ड इट कैन बी सेड दैट द सर्विस वाज नॉट सॉट टू बी अफेक्टेड ऑन द डिपेंडेंट एट हिज रेजिडेंस, द सेम वाज ऑर्डर्ड टू बी अफेक्टेड ऑन हिज बिजनेस प्रीमाइसेस, द प्रोफॉर्मा ऑफ द एफिडेविट व्हिच द प्रोसेस सर्वर हैज फाउंड was bound to sworn has been prescribed in the CPC in form number 11. No affidavit as per this proforma has been sworn by the process server. Perusal of the record also shows that no efforts have been made to examine the serving officer as per the provisions of Order 5 Rule 19 of the CPC by this court before ordering to proceed ex parte against the defendant. It was mandatorily required for the court to examine the serving officer as the facts have not been verified by the affidavit of the serving officer। और पैरा 53 में इसमें जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, इन द रिपोर्ट ऑफ द प्रोसेस सर्वर एज मेड ऑन द समन which were issued against the defendant for 13 March 2012, there is no endorsement stating the circumstances under which he had affixed the summons. The process server has also failed to mention the names and addresses of the persons by whom the residential address of the director of the defendant was disclosed by him। और पैरा 55 एंड 56 में जो है कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, एज स्टेटेड अबव बिफोर प्रोसीडिंग ex parte against the defendant, no efforts have been made by this court to examine the process server. It was obligatory upon this court to comply with the provisions of Order 5 Rule 17 of the CPC. The legislature in its wisdom has vested the jurisdiction in court to examine the serving officer even if the report of the serving officer is supported by an affidavit. Bare reading of Order 5 Rule 19 of the CPC mandates that before declaring the fact that the summons have been duly served, it was obligatory for this court to examine the process servers on oath as the requisite affidavit has not been sworn by the process server. The report made by the Nazir over the summons does not fulfill the mandatory requirement of Order 5 Rule 19। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसमें एस्पेक्ट एक डील किया गया और उसको बड़ा एलोबरेटली जो है डिसाइड किया गया है। और फाइनली जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट द डिपेंडेंट इन द प्रेजेंट केस हैज नॉट ड्यूली बीन सर्व्ड, एज सच द अपील इज अलाउड बाय
setting aside the ex parte judgment and decree dated 1 July 2013 and civil suit number so and so is ordered to be restored to its original number subject to deposit of 25% of the amount sought to be recovered by the plaintiff in this case within a period of 1 month from the date of appearance in this case, failing which application under order 9 rule 13 of CPC shall be deemed to have been dismissed. तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है सीपीसी, जैसे कि सबको मालूम ही है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है, बहुत टेक्निकलिटी होती है, और ये टेक्निकलिटीज के ऊपर जो है ये बहुत ही एक अच्छी जजमेंट आई। नेक्स्ट जो है जजमेंट वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, और ये जो जजमेंट है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सत्येंद्र वेदर जी की कोर्ट सिंगल बेंच से आया है। इसमें जो मेन ग्राउंड्स जो अलेज किए गए थे वो था द स्पेसिफिक केस ऑफ petitioner is that though there is no provision for relaxation in the act, rules or IDP to allow construction of additional stories and to exempt in maintenance of the requisite setbacks, yet respondent number 1 to 5 have proceeded to sanction the proposed construction plan of the society by granting the relaxation dehoes the provisions of act, rules and IDP. Petitioner has alleged that during the course of raising construction, the society has thrown huge debris and boulders on the adjoining land and has already caused deconstruction and damage to the substantial portion of the land of the petitioner. Petitioner further alleged that the cutting of the hills were being done by the society in excess of the required parameters. The forest wealth was also subjected to the destruction. ऑनरेबल कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जो प्रिंसिपल लॉ का है उसमें उसके बारे में ये पैरा 13 में कहा है, सोसाइटी रिक्वायर्ड प्रायर प्लानिंग परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी बिफोर स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ द लैंड। द परमिसिबल नॉर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड इन द रूल्स ऑफ चैप्टर सो एंड सो। इट इज नॉट इन डिस्प्यूट दैट एज पर प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स FAR of only 1.75 is permissible. Floor area ratio means the ratio between the net plot area and total floor area of all the floors of the building. The limits of setbacks on all four sides have also been prescribed. और अप्लाइंग द प्रिंसिपल लिफ्टिंग ऑफ वेल जो है ऑनरेबल कोर्ट ने पैरा 21 में कहा है, इन द अबव noted background, it becomes necessary to lift the veil and to find out the reasons behind commission of patently illegal acts by the instrumentalities of the state. For such an exercise will have effect on the final outcome of the instant case. और इसमें जो है पैरा 28 में ये कहा कि जो डिसीजन है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं लिया, यानी कि इसमें जो स्टेट है वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, बल्कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उन्होंने ये डिसीजन लिया, बल्कि ये डिसीजन उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर जो है स्टेट ने इम्पोज किया है। Thus, there remains no doubt that instead of decision being taken by the authority, the state government had taken the decision of granting relaxation to the society, which not only was without jurisdiction but was also arrived at in the most casual manner. और पैरा 31 में जो है कैटेगोरिकली इन्होंने कहा कि इन सच लाइक सिचुएशन as noticed above, the state government has not been invested with any authority to grant planning permissions or to relax the prescribed norms. और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रोपोजिशन इसमें डिस्कस हुई है वो पैरा 32 में इसमें कहा गया कि इट इज मोर देन सेटल्ड दैट इफ ए स्टैट्यूट रिक्वायर्ड फॉर एनीथिंग टू बी डन इन ए पर्टिकुलर मैनर इट शुड बी डन इन दैट मैनर और नॉट एट ऑल। अगर उसके बाहर किया है, स्टैट्यूट के प्रोविजन से बाहर किया है, तो वो जो है एक्शन किसी भी अथॉरिटी का ऐसे ही इलीगल हो जाता है। जो ऑब्जर्वेशन इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने की है पैरा 35 में वो कहा है, दस दिस कोर्ट हैज नो हेजिटेशन टू होल्ड दैट नीदर द अथॉरिटी नॉर द स्टेट गवर्नमेंट हैज एनी पावर or jurisdiction to relax the prescribed norms save and except the powers vested in director by virtue of clause so and so, which is available in the case of a public interest or in the interest of town design only. Ultimately इसमें जो है कोर्ट की जो डायरेक्शन आई है पैरा 49 में आई है वो है डायरेक्शन नंबर 1, the relaxation granted in floor area ratio and setback areas in the case of respondent number 7 by respondent number 1 and 2 on 2nd December 2016 is held to be without jurisdiction and hence illegal. Consequently, the planning permission granted by respondent number 5 on 6 April 2017 is also held invalid to the extent it exceeds the permission
limits of floor area ratio and setbacks. Respondent number 5 shall be under direction to revoke the planning permission dated 6 April 2017 granted in favor of the respondent number 7 within 8 weeks from the date of passing of this judgment, so as to bring the planning permission strictly within the prescribed norms as per the provision of the Act rule and do. जो थर्ड डायरेक्शन है, रिस्पोंडेंट नंबर 5 is further directed to take necessary steps under section 39 of HP Town and Country Planning Act 1977 and any other applicable provision of law in respect of the construction, if any already raised by the respondent number 7 in excess of permissible limit prescribed under the Act rules and IDP. ये एक बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि बड़े हैपाजार्ड मैनर्स में जो है कंस्ट्रक्शन होती है, डेविएशन होती है, फिर वो किसी तरह से वो मैनेज कर लेते हैं उसको और इलीगली जो है कर लेते हैं। ये एक डिसीजन जो है एक एनडीपीएस में जो आया, इसमें एक क्रिमिनल अपील थी और इस केस के जो ये जो डिसीजन जो आया है ये भी जो है ऑनरेबल डिवीजन बेंच का है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तलोक सिंह चौहान एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच से आया है। इसमें जो मेन फैक्ट्स है वो पैरा 2 में दिए गए हैं। ये जो है सेक्शन 20 के तहत जो है इसको 11 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट मिली थी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली थी, प्लस 1 लाख जो है फाइन लगा था। और इसमें बहुत सारे जो इश्यूज डिस्कस हुए जैसे सेक्शन 50, सेक्शन 42 और जो सेक्शन 50 के बारे में जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई, इफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस आर सीन इन व्यू ऑफ द डिसीजंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट as referred above, this court has no hesitation to hold that the provisions of section 50 of the NDPS Acts are not applicable in the present case. सेक्शन 42 पे जो है पैरा 40 में कहा है, so far as non-compliance of section 42 of the NDPS Act is concerned, there is nothing on the file even to probabilize that the police party present on the spot was having any prior information regarding indulgence of the accused in the business ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कॉन्ट्राबैंड। ऑफिशियल विटनेस के बारे में जो कोर्ट ने कहा है कि लंदन ट्रायल कोर्ट हैज कन्विक्टेड अक्यूज्ड इन द केस लाइंग अपॉन द टेस्टिमोनीज ऑफ द ऑफिशियल विटनेस। देयर इज नो लीगल एम्बार्गो दैट द कन्विक्शन कैन नॉट बी बेस्ड अपॉन द टेस्टिमोनीज ऑफ ऑफिशियल विटनेस। द लॉ treats the official witness at par with the independent witness. However, before accepting the testimony of official witnesses to convict the person for the offences punishable under NDPS Act, it is the bounden duty of the court to see whether the testimony of the official witness is confidence inspiring or having the ring of truth in it. रिकवरी भी जो है इसमें डाउटफुल पाई गई है, तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन 52 पैरा में की है। Court is constrained to hold that things have not happened at the spot in the manner in which the same have been stated to be happened by the prosecution witness. और जो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि ये फॉल्स केस है आईओ का जो 54 में ये at the cost of repetition, it is the case of the IO that he was not having any prior information regarding the indulgence of the accused in the transportation business of the churus. Then how these words have found mentioned in the document. तो कई बारी जो है एक ओरल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है वो डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं हुए एज पर जो सिचुएशन होती है तो फिर डेफिनेटली वो कोर्ट उस चीज को फाइंड आउट कर ही लेता है। और पैरा 57 में जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा था, पेरूजल ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट्स shows that the IO in anticipation has mentioned the section which would attract against the accused in this case even before the search of the rucksack or before the recovery of the contraband of the churus. Para 58 में कोर्ट ने कहा है, in the document exhibit so and so the contents of IO kit have been stated to be the weighing scale weighing weights of 50 grams to 1 kg and other articles when the IO was having the weight of only 50 grams to 1 kg in the IO kit. Then how the contraband weighing 3 kg 200 gram was weighed is a question which has remained unexplained. और डिस्क्रिप्शन ऑफ बैग का भी इसमें एक बहुत बड़ा इशू है। उसमें कोर्ट ने कहा है कि
Another point which has been highlighted by the learned counsel for the appellant accused in this case is that the contraband was recovered from पिट्ठू बैग, रक्सैक। लेकिन जो एफएसएल की रिपोर्ट्स में है उसमें कहा है कि इन ब्लैक एंड मल्टी कलर्ड क्लॉथ बैग। और एनसीबी फॉर्म के बारे में भी जो उसमें एंट्रीज हुई है, कोर्ट ने जो ये फाउंड आउट किया है कि हैज बीन रिटन इन द रेडिंग। From this fact, it can be stated that the NCB form was not filled by the IO in the manner as deposed by him. The NCB form in NDPS cases is an important and vital piece of evidence. When the same comes under the clouds of suspicion, the benefit of the same would also go to the accused. और अल्टीमेटली इन सब फैक्ट्स की ऑब्जर्वेशन के बाद जो ऑनरेबल कोर्ट ने अपील अलाउ की, अक्यूज को अक्विट किया और डायरेक्शन दी कि ही विल रिलीज ऑन बेल। तो एक जो और जो जजमेंट वो ये भी 13 जनवरी 2023 की है, वो आई है एमएसएमई एक्ट के बारे में। और ये जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की जजमेंट आई। इसमें जो फैक्ट्स है वो इस तरह से है। Petitioner's case is that petitioner firm is registered unit under the provisions of MSMED Act, and therefore for adjudication and resolution of the dispute in reference provision of MSMED Act were applicable notwithstanding any terms and conditions contained in the contract, purchases order or any other law in terms of the provisions of the section 24 of MSMED Act, which provides that section 15 to 23 shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for a time being in force, and therefore instead of relegating the parties to waive the recourse to in terms of the arbitration clause in the agreement, the council had to follow provisions of section 18 of the MSMED Act. इसमें बेसिकली जो है कंफ्लिक्ट ये था कि एक आर्बिट्रेशन ऑलरेडी पार्टीज के बीच में बना था, लेकिन जो इसमें डिस्प्यूट था वो MSMED एक्ट के तहत भी आ रहा था। तो ये था कि विच एक्ट विल प्रोवेल, वेदर आर्बिट्रेशन क्लॉज आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत प्रोवेल करेगा या MSMED एक्ट का प्रोविजन प्रोवेल करेगा। तो अल्टीमेटली जो है इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने पैरा 19 में कहा है, in view of the above discussion, impugned order so far as it is directing the party to resort to the arbitration clause already existing in the agreement to resolve the dispute is quashed and set aside with the direction to the council to proceed further in accordance with the provisions of MSMED Act as applicable। यानी कि कोर्ट ने ये होल्ड किया कि MSMED Act क्योंकि लेटर है इन द पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके प्रोविजन जो है प्रिवेल करेंगे। एक जो लास्ट डिसीजन जो इस दिन का है वो है that again is by the honorable division bench by honorable Mr. Justice तलोक सिंह चौहान and honorable Mr. Justice वीरेंद्र सिंह। ये जो है रिलेटेड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, बैक वेजेस का। इसमें जो फैक्ट्स है ब्रीफली वो ये था कि एज पर द अवार्ड सेड बाय द वे ऑफ रेट द लर्नड लेबर कोर्ट हैज अवार्डेड ए सम ऑफ ₹1 लाख टू द पिटिशनर एज कंपनसेशन। तो ये इसके अगेंस्ट ही आए थे। इनका कहना था कि मुझे जो है बैक वेजेस भी मिलने चाहिए विथ जो है रीइंस्टेटमेंट। तो इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस की है, एक पैरा 18 में की है, पेरूजल ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द लर्नड लेबर कोर्ट shows that the termination of the petitioner has been held to be illegal, being against the provisions of the Industrial Disputes Act. The said findings of the learned labor court have not been assailed by the respondent bank. As such, those findings attained finality. और पैरा 22 में ये कहा द लेबर कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ फैक्ट्स इज द कोर्ट ऑफ द फैक्ट्स एंड इट हैज स्पेसिफिकली बीन हेल्ड that the reinstatement of the petitioner is not justiciable as in the year 2010 the respondent bank has started VRS for the purpose of reducing workforce. Thousands of workers took VRS. The London Labour Court has considered all these facts and then decided to award a compensation। और ultimately जो है ये होल्ड हुआ है इसमें कि ये जो है जो कंपनसेशन है, जो लेबर कोर्ट का डिसीजन है, इन द गिवन फैक्ट्स इट वाज ए राइट, जो इसमें बैक वेजेस डिनाई किए गए और रीइंस्टेटमेंट डिनाई किए। तो ये थे जी हमारे कुछ एक जो डिसीजन 13 जनवरी को आए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट के, जो आपको मैंने आपके सामने लाए हैं। हो सकता है कि आप लोगों के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इनमें से कोई भी डिसीजन बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक रिक्वेस्ट जाने से पहले ये मैं जरूर करूंगा कि प्लीज़ एंड प्लीज़ आप काइंडली सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सजेशन दें कि ऐसा और कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है जिस पे मैं
लॉ रिसर्च करके जो है वीडियो बना सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।